property रो छोट छोट sections and एबे interesting लगे अपन. So write down. First लिखंतु transfer of property definition. Definition of transfer of property. Section 5. Definition of transfer of property. Write down. Transfer of property means an act by which next line re, a living person conveys property. A living person conveys property. Next line re, in present or in future. In present or in future. Next, to one or more other living persons. To one or more other living persons, or to himself, or to himself, or to himself and one or more other living persons, or to himself, or to himself and one or more other living persons, or to himself and one or more other living persons. Next line. And to transfer of property is to perform such act. And to transfer of property is to perform such act. Author coach. Transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons, or to himself and one or more other living persons, and to transfer of property is to perform such act. So पूरा definition टा आपको divide करले ही बुझा पड़ जियो. तो first लिखोगे first बुझियो what I am saying. First आसिला transfer of property means an act. तो भी question आसिला कि गोटे act माने कौन. मु जदि मिंशा को गोटे property transfer करूची मु कही देली कि मिंशा property मु तुमको transfer करली तो थोड़ी ना transfer हे गला. I need to act or not upon that. The question आसला delivery of possession गोटे प्रकार act or not, registration गोटे प्रकार act or not, written instrument गोटे प्रकार act or not. तो मु किछि गोटे act करिथिबा निहाती दरकार. गोटे document execute करथिबा दरकार कि ताको delivery of possession करुथिबा दरकार. कला property टा various way रे हे परिबो. Registration document रे हे परिबो, delivery of possession रे हे परिबो, written instrument रे हे परिबो. तो जोठी जोटा पाई की रिक्वायरमेंट अछि मु सेही प्रकारर एक्ट गोटे करूथिबा निहाती दरकार. तो मु गोटे एक्ट कली, मु गोटे डिलीवरी ऑफ पोजीशन कली, मु गोटे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कली, तो मु किछि गोटे एक्ट कली. तो ए सेही एक्ट करिया द्वारा मु एज अ लिविंग पर्सन कन्वे करूची प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन. सो जेतेबेले मु से एक्ट टा करिली जो एक्ट रे प्रॉपर्टी टा कन्वे हैला तो एक्ट तो बुझी हैला. एबे क्वेश्चन आसला मु लिविंग पर्सन सेडा तो बुझी होची कि मु एक्जिस्टेंस रे अछि एंड मिंशा इज अ लिविंग पर्सन भी बुझी होची से एक्जिस्टेंस रे अछि. देन मु कन्वे करिली. कन्वे रो माने हैला कि मु जदी गोटे मिंशा को गोटे घर ट्रांसफर करूची मु गोटे एक्ट ऑफ ट्रांसफर करिया पूर्वरु whether Minsha had any kind of right relating to that house. Nothing. किंतु मु जो एक्ट टा करिली ता द्वारा जो राइट्स एंड ऑल अछि सेडा मिंशा को ट्रांसफर हे गला ना नाही. यस. तो आउ गोटे क्वेश्चन आ सहित रिलेटेड थाए सबले मन रखंतु हाउ यू नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज योर्स. हाउ यू नो तुम्हें कौन प्रॉपर्टी को धरी के बुलुछ ना तुमको क्रेन लगे के प्रॉपर्टी खोली के दउचंती. You are simply exercising some rights over that property or not.
तो कन्वे मु तुमको कौन कली जदि ओनरशिप कन्वे करूची मु तुमको सब प्रकार राइट्स टू दैट प्रॉपर्टी कन्वे कर देली ना नहीं कि तुम्हें बिक्री कर परिबो तुम्हें रही परिबो तुम्हें एंजॉय कर परिबो तुम्हें भांगी परिबो तुम जा इच्छा तुम्हें कर परिबो एंड जदि मु तुमको लीज कली प्रॉपर्टी मु तुमको गोटे पार्शियल राइट ट्रांसफर कली तो मु तुमको गोटे रेस्ट्रिक्टेड राइट्स ट्रांसफर करिवि ना नहीं रेसिडुअरी मो पाखरे रहइबो तो फर्स्ट आसिला मी बीइंग अ लिविंग पर्सन conveying you something and you are another living person and से conveyance टा मु कौन करिछि by my act करिछि okay and एबे क्वेश्चन आसला मु जो प्रॉपर्टी टा को कन्वे करिली सेटा मु प्रेजेंट रे भी करि परिबी फ्यूचर रे भी करि परिबी तो फर्स्ट क्वेश्चन आसला कि वेदर कन्वेयंस इज फ्यूचर और प्रेजेंट और प्रॉपर्टी इज फ्यूचर और प्रेजेंट भाभी के कहले कि कन्वेयंस टा फ्यूचर और प्रेजेंट थाए फ्यूचर और प्रेजेंट रो थाए ना प्रॉपर्टी टा फ्यूचर और प्रेजेंट रो थाए it is always the conveyance because ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ convey କରିଲି ସେଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ବି କରିପାରିବି 15 ଦିନ ପରେ ବି କରିପାରିବି ମାସେ ପରେ ବି କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ property ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଥିବ ନା ନାଇଁ for example ଯୋଉ rent ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ property ର rent agreement ମୁଁ କରିବି as to ମତେ ସେମାନେ partial rate transfer କରିବେ property ଟା existence ରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ तो ମୁଁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନେଇପାରେ ମୁଁ ସେଟା କାଲି ବି ନେଇପାରେ ମୁଁ ସେଟା 15 ଦିନ ପରେ ବି ନେଇପାରେ ମୁଁ ମାସେ ପରେ ବି ନେଇପାରେ ମୋ କନଭେୟନ୍ସ ଟା ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ମାସେ ବର୍ଷେ ତା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ property should be in existence or not whether future property can be transferred ଯୋଉ property ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି ମୁଁ ସେ property କୁ transfer କରିପାରିବି କି ତ this is the question of your prelims कि ଏଇ ଯୋଉ conveyance ପରେ ଗୋଟେ present or in future ଲାଗିଲା whether this is relating to the conveyance or whether this is relating to the property. So whether future property can be transferred under Transfer of Property Act? No. So the conveyance, the term future or present is relating to the conveyance term. कि ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଦେଇପାରିବି କାଲି ଦେଇପାରିବି या फिर ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଇପାରିବି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ କୁ କହିଲି କି ଯଦି ତମେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଏଥରିକ କ୍ରାକ୍ କରୁଛ ଦେନ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ କଟକରେ ଥିବା ମୋର ଘରଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି ତ whether the conveyance is future conveyance or not but whether that property is in existence or not तो whether I can transfer a property जोटा कि एपर्यंत मोर नाही राम मो नारे गोटे विल करिसंते एबे राम मरिया को टाइम अछि एबे मु से विल रो जो प्रॉपर्टी टा सेटा ट्रांसफर करि परिबी कि no because that's only a future possible right which cannot be transferred right तापर नेक्स्ट आसिला तो मु काहा को ट्रांसफर करिवि मो मल्टीपल लोगों को ट्रांसफर कर परिबि जो माने लिविंग पर्सन वन और मोर लिविंग पर्सन या फिर मु निजो को भी ट्रांसफर कर परिबि बट एबे क्वेश्चन आसला कि मु निजो को केमते ट्रांसफर करिवि फॉर एग्जांपल जदी मोर गोटे घर अछि एंड मु से घर को गोटे कमर्शियल माने कमर्शियल कंपनी और समथिंग रे कन्वर्ट करूचे देन क्वेश्चन आसला कि से घरटा एबे ट्रांसफर होची ना नहीं लीज को फॉर दैट जहाँ भी कंपनी एंड ऑल खोला हबो एंड सेटा कंपनी ना रे करा गला ना नहीं या फिर पूरा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ही तुम्हें दे देला देन सेटा कंपनी हेड को पळेला ना नहीं या फिर मु गोटे ट्रस्ट प्रॉपर्टी को क्रिएट कले मोर गोटे प्रॉपर्टी अछि मु कहली एटा गोटे ट्रस्ट प्रॉपर्टी रहबो एथरु लोक माननकु एजुकेशन पाई कि पैसा दिया हो जो माने इकोनॉमिकली बैकवर्ड अछंते तो एबे से ट्रस्ट प्रॉपर्टी रो ट्रस्टी मु मो निजो को रखिले तो सेही प्रॉपर्टी रो ओनरशिप राइट टा को मु मो निजो को ट्रस्टी हिसाब रे ट्रांसफर कली ना नहीं सो द क्वेश्चन हियर कम कि मु मो निजो को गोटे प्रॉपर्टी जनरली ट्रांसफर करि परिबि कि नो बट मु मो निजो को गोटे प्रॉपर्टी अनदर कैपेसिटी रे करि परिबि ना नहीं being a trustee or being an agent or being something जोड़ा कि मु ट्रांसफर करियर टाइटल क्रिएट करूची एंड बोथ एंड रे लोक माने बंची थिबा लोक हेथिबा दरकार ना नै दे शुड ऑल बी लिविंग पर्सन और नॉट तो एबे क्वेश्चन आसला कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर गोटी लोक को करा जाए ना मिनिमम गोटे लोक को करा जाए एंड दैट कैन बी मोर देन वन मिनिमम वन बट कैन बी मोर देन वन सेमती मु मो निजो को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूची सेटा मो सहित आउ जण को भी कंबाइंड करिके कर परिबे ना नै so this is the definition of proper transfer of property कि transfer of property रे मु गोटे act करिली
जो एक्ट रे बीइंग अ लिविंग पर्सन आउ गोटे लिविंग पर्सन को या फिर मोर देन वन लिविंग पर्सन को मु गोटे प्रॉपर्टी कन्वे करिली माने ता पाखरे जो राइट्स गुडा नथिला ताको एबे मिलिगला मो एक्ट द्वारा एंड से कन्वेंस टा मु प्रेजेंट रे करि पारे किंबा फ्यूचर रे करि पारे बट प्रॉपर्टी प्रेजेंट रे एक्जिस्टेंस रे थिबा निहाती दरकार एंड इवन मु निजो को अदर कैपेसिटी रे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करि पारिबी आ भितर किछि डाउट अछि अदर कैपेसिटी रो एग्जांपल हैला शीर्षक कि जदी आपणकर ओनर अछंती आपण गोटे घरर एबे से घर को आपण ट्रस्ट पई कि दे देले एबे से घरे को माने रहबे जो माने सब ओल्ड एजेड लोकंडल रहबे एंड नाउ दैट इज कन्वर्टिंग इनटू अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी और नॉट so there should be a trustee or not and you're making yourself that trustee then whether you're transferring your Shishak Bharadwaj ownership to Shishak Bharadwaj trustee of that trust or not. Okay, so there you are transferring property to yourself. So next write down bear a transfer of अरे thank you so much ऐश्वर्या को माने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रो बेयर एक्ट पढुचंती बंद करिके रखंतो संग संग बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रो बेयर एक्ट पढिबे नाही हरान हे जिवे टिप्पी रो बेयर एक्ट बिल्कुल पढिबे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग टिप्पी सब बेले बुझिबे तापरे पढिबे एटा पूरा टेक्निकल बुझी गला पर इट्स वेरी इजी न बुझिले बस गोल गोल सिडे बुलुथिबे आ किछ नै the next write down living person living person includes living person includes किछि shortcut nahi there is no shortcut to success no barrack is going to help you no notes no materials nothing it's only the book and the book and the book okay so write down the living person includes the living person includes a company or association or body of individuals. Living person includes a company or association or body of individuals, whether incorporated or not. Whether incorporated or not. Okay, the simple jinsa I am giving an example. Ebe mu jo ghorata nebi, whether that will be transferred in the name of SLC or not. So SLC is a corporation or not. The company jaha bhi. Then say jagare question asila कि whether he that is a living person or not. Yes. तो company association body of person भी गोटे living person बोली धरा जीव. Okay. They are all judicial person बोली धरा जीव. So this is all about 5 pro definition. Next come to 5 pro explanations. Write down. What are the points need to be know? जानिया दरकार section 5 जानिया पाएंगे. Number 1. Transfer of property is number 1 an act by which number 2 a living person number 2 a living person number 3 conveys number 4 in present or future number 5 property number 6 to another living person or to himself mouth coach transfer of property is number 1 an act by which number 2 a living person number 3 conveys
Number 4, in present or future. Number 5, property. Number 6, to another living person or to himself. तो हमें से ही पढ़ ली. It is an act by which one living person conveys property in present or in future to another living person or to himself. So now we are going to explain all the things कि act कौन, living person कौन, convey कौन, property कौन, future कौन, present कौन. So write down. First heading दियंतु, transfer of property is an act. Transfer of property is an act. तो as I said earlier, ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କରିକି property transfer କରିପାରିବି କି? Immovable property ଟା crane ରେ ଖୋଳା ହେଇକି ଦିଆ ହୁଏ. ମିନସାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ immovable property ଦେଲି, then ମୋ building କୁ crane ରେ ଖୋଳିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଥୋଇକି ଆସିବି? No. So ମୁଁ କଣ କରିବି? I will transfer the rights of that property to her by my act. Okay. So write down. Transfer of property is an activity or process. Transfer of property is an activity or process. Under this activity, something is done, and something is done रे bracket देके लिखंतु, may be registration, delivery of possession. Under this activity, something is done, bracket रे registration, delivery of possession. By a person who wants to transfer his property, who wants to transfer his property who wants to transfer his property. Okay, so the transfer of property is an activity or process. Under this activity, something is done like registration, delivery of possession by the person who wants to transfer his property. It is not transferred automatically. It is not transferred automatically. So it is an act. तो एथि क्वेश्चन आसिला, मते कहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टा इंटर वाइवस ना ऑपरेशन ऑफ लॉ द्वारा हुए. It is inter vivus, one living person to another living person. The documents are testamentary or non-testamentary? भाभी के answer दे. It's non-testamentary document, right? But the question here comes कि जदि मु मरी जाउछ किछि न करिके मो प्रॉपर्टी टा ऑटोमेटिकली मोर heirs मानन को जीवन ना नै, मते जे एक्ट करिया को पड़ला, बस मरिया को पड़ला. It's not my act, it's God's act. तो जदि मु मरी गली by God's act, तो मो प्रॉपर्टी टा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हे जिवो मोर हेयर मान. But the question here comes कि लिविंग पर्सन रो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हबा पई ताको गोटे एक्ट परफॉर्म करिया निहति दरकार ना नै. Yes, delivery of possession, registration, something so that जोठी तार प्रॉपर्टी रो राइट टा आउ जण को ट्रांसफर हे जिवो. Okay, the next write down लिविंग पर्सन कोन. The person who makes the transfer is called a transferer. Okay, तो जीए ट्रांसफर करे ताको ट्रांसफरर कुहा जाय. ट्रांसफरर रे हाइपेन दी की लिखंतु ह्यूमन पर्सन और जुरिस्टिक पर्सन. ह्यूमन पर्सन और जुरिस्टिक पर्सन. ह्यूमन पर्सन माने तो जानचंती हु ह्यूमन को माने आपण माने सब ह्यूमन. आई एम अ ह्यूमन मानव बस भगवान कर सबडू सुंदर सृष्टि. So human माने us. Then next, or a juristic person.
juristic person रे कौन आसला लिखंतु companies firms corporation university etc तो juristic person रे companies आसला firms आसला corporation आसला university आसला तो जो मानकर law अनुसार से माननको person बोली कहा जाए but they are not human तो human being is a living person as well as juristic persons are companies firms corporation university etc तो क्वेश्चन है कि जदियो से माने ह्यूमन नुहंती से माने ह्यूमन को द्वारा परिचालित ना नहीं जेहेतु से माने ह्यूमन मानक द्वारा परिचालित देन से मानक ट्रांसफर हो जिवो काहे ना सेडा किछि कांथ वाड़ कथा तो नाही सेडा गोटे लोक ही परिचालित करूची बट जुरिस्टिक नेम रे करूची जुरिस्टिक पर्सन से अछि सबे तो फर्स्ट क्वेश्चन आसिला कि गोटे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पाई कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंक कोन कोन करिबा दरकार देयर शुड बी परफॉर्मेंस ऑफ एन act and GA transfer karuchi he should be a living person and a living person can be a human as well as a juristic person so the question here comes whether a juristic person can transfer property or not whether companies firms corporation they can transfer properties or not answer will be yes next write down transferor may be one person or a class or group of persons or a class or group of persons. So transfer टा गोटे लोक कर परिवो या फिर class of group of persons भी करी परिवे. Next लिखंतु human hyphen age of majority and sound mind. तीनटा जिनस लिखंतु capacity hyphen एमती लिखंतु capacity hyphen number 1 age of majority capacity hyphen number 1 age of majority number 2 sound mind number 3 not otherwise disqualified not otherwise disqualified not otherwise disqualified then GA transfer हेबे first तो से major हिथिबा निहाती दरकार ना नहीं transfer major हिथिबा निहाती दरकार sound mind रो हिथिबा दरकार ना नहीं तो transferer sound mind रो हिथिबा निहाती दरकार and transferer disqualified हे नथिबे so let me give you an example if I am a lessee मु गोटे property को tenant हिसाब रे hold करछि so whether I can transfer the property as an owner because I have a restricted interest into that property I am disqualified from transferring the property तो गोटे property transfer करिया ପାଇଁ कि जिए transfer करूछि तार सेही related right थिबा निहाती दरकार unless and until मोर गोटे right से related अछि मु से right को transfer केमती करिवि तो मु जदि गोटे transferer मु सेही right मो पाखरे रखुथिबा निहाती दरकार if मु ownership transfer करछि then मु owner हेथिबा निहाती दरकार ना नै and if मु partial right transfer करछि then मोर partial right थिबा निहाती दरकार ना नै तो transferer रो capacity आसले major हेतिबा दरकार sound mind हेतिबा दरकार ଆଉ otherwise disqualified न हेतिबा दरकार एंड आरो भी अलग रूल्स अछि जेमति कि कोर्ट प्रोसीडिंग रे कोर्ट रो कोनोसी मेंबर किनि परिबे नाही सेही जागा उडा सोडा हमें परे पढिया the next write down property can be transferred हाँ एमति लिखंतु property can be transferred to more than one living persons property can be transferred to more than one living persons and जहाँ को property transfer करा जाए सेमान को कौन कुआ जाए transfer re so जो माने को transfer करा जाए सेमान को transfer re कुआ जाए and the most important point here you need to remember
ट्रांसफरी को कौनसी कैपेसिटी अंडर रे अणा गला नहीं. I can transfer to a minor, I can transfer to a person who is unsound, and I can transfer to more than one person like such. किंतु गोटे existence रे transfer थिबा निहाती दरकार ना नहीं. Yes, तो ट्रांसफरी को existence रे थिबा निहाती दरकार. से गोटे कंपनी एसोसिएशन जे existence रे तार गोटे अस्तित्व थिबा निहाती दरकार. आ गोटे ह्यूमन बीइंग जन्म हेकि थिबा निहाती दरकार या फिर मदर ओम रे थिबा निहाती दरकार. तो एबे फर्स्ट दीटा क्वेश्चन आसला. जदि गोटे मनीषटा मदर ओम रे अछि, then whether he is a person in existence or not, ओम रे अछि. Yes. किंतु जदि गोटे लोक ओम रे भी नहीं, then whether he is a person in existence? No. So the question आसिला कि the person, unborn person, जो मैंने एपर्यंत जन्म ही नाहंती, as a general rule, whether transfer तांको करा जाई पारिबो कि generally? करा जाई परियो? No. But there is an exception to this जोड़ा हमें 13 रे पढ़िया. But एटा गोटे क्वेश्चन प्रीलिम्स रे मन रखंतु मु काले भूल जिबि सेतले कहबो. Obviously भूलिबिनी से टाइम रे. गोटे क्वेश्चन आसे कि अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर हुए ना नहीं. लोक तो बहुत चालाक. 13 पढ़िचंती तो सेमाने हां मारी के आसंती. बट आंसर हां हबो ना हबो. Because 13 रो प्रथम लाइन ही कहिला कि generally property cannot be transferred to an unborn person, but there is an exception कि if it is transferred to someone life interest रे plus absolutely unborn जोड़ा में पढ़िया 13 रे then only transfer हबो. तो मोर क्वेश्चन रो बस आंसर एतिकी दियंतु कि जदि ट्रांसफर एक्जिस्टेंस रे नाही, not even in mother's womb, then ताको ट्रांसफर करा जाई पारे कि. बट जदि गोटे लोकटा मदर womb रे अछि ताको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा जाई परिबे ना नै. सो लिविंग पर्सन दीटा कैटेगोरी रे डिवाइड हेले. गोटे हेले ट्रांसफरर, गोटे हेले ट्रांसफरी. ट्रांसफरर सीए जे प्रॉपर्टी दियंती, ट्रांसफरी सीए जे प्रॉपर्टी नियंती. ट्रांसफरर मेजर हिथिबा दरकार, साउंड हिथिबा दरकार, कैपेसिटी रखुथिबा दरकार. ट्रांसफरी को कौनसी कैपेसिटी अंडर अणा गला नहीं. केवल ट्रांसफरी को एक्जिस्टेंस रे थिबा निहाती दरकार. इवन मदर ओम रे भी जदि जणे अछि ताको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा ही पारिबो. बट जणे जदि मदर ओम रे नहीं, अनबोर्न पर्सन, कंप्लीटली जनरल रूल अनुसार ताको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुए नहीं. नेक्स्ट राइट डाउन कन्वेंस. कन्वेज लिखंतु कन्वेज. जदि रंजित को मु गोटे गिफ्ट कन्वे कली, देन आगुरु रंजित पाखरे सेटा थिला. फॉर एग्जांपल सिमालिस ट्रैवलर फोटो. सो द क्वेश्चन इज कि आगुरु मो पाखरे सेटा थिला कि? नो. जेबे आसे कि पहुंचिला मु सेटा स्टेटस रे रखली ना नै. यस. बट द थिंग इज सिमाली मते सेटा को कन्वे करिले ना नै, जहा मो पाखरे नथिला. एबे सेटा मो पाखरे केमिति आसला? सिमाली रो एक्ट द्वारा सेटा convey heiche mate. So what is the meaning of conveys? Write down. There must be conveyance. There must be conveyance in every transfer of property. There must be conveyance in every transfer of property. Because conveyance न हेले तुम्हारो ट्रांसफर हो ही नहीं. If मो पाखरे जहा नहीं मते ताको मिलुनी, then से जगह रे मते कन्वे कौन ही करा गला. तो मोरो जहा नहीं जोड़ा मते मिलुची सेडा को मते कन्वे करा गला बोली कुहा जीवो. So there must be a conveyance in every transfer of property. Conveyance means any act of the transferor. Conveyance means any act of the transferor. Any act of the transferor by which certain new titles or interests are created in favor of the transferee.
There must be a conveyance in every transfer. Conveyance means any act of the transferor by which certain new titles or interests are created in favor of the transferee to whom the property is being transferred. To whom the property is being transferred. Is being transferred. It is any form of assurance inter vivos. It is any form of assurance inter vivos in which some new title or interest is created. Some new title or interest is created in favor of the transfer. In favor of the transfer. So I have a property Katak. शिवानीर से प्रॉपर्टी रे किछि भी राइट अछि as to से प्रॉपर्टी रे रहिबा बिक्री करिबा एन्जॉय करिबा लीज रे दबा नाही मु गोटे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कली शिवानी नारे बीइंग अ ट्रांसफरर एंड शी बीइंग द ट्रांसफरी आउ रेटी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन रे रजिस्ट्रेशन हैला कि से प्रॉपर्टी को मु शिवानी नारे कली तो देयरफॉर आई एम कन्वेइंग ऑल माय राइट्स टू शिवानी or not. Now she can go to the property or not. Now she can enjoy that property or not. Now she can rent that property or not. Now she can sell the property or not. So she can alienate, she can stay, she can enjoy, she can do anything, whatever she wants to do with that property because now the rights has been conveyed by me to her. तो मोर कन्वेयंस थिबा निहाती दरकार टू अनदर पर्सन बाय माय एक्ट जोथिरे मु ताको से राइट्स गुडा दोची जो जो राइट्स गुडा ताको ट्रांसफर रे मिलिया दरकार एंड जदि मु एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कली absolutely transfer कर देली so I have to transfer every rights remaining rights of mine or not किछि मु रेसिडुअरी राइट रखी पारिबी मो सहित and जेबे मु गोटे partial right transfer करछि I need to transfer only that part or not. For example मु लीज देली मु लीज रो ओनरशिप ट्रांसफर कर परिबी राइट टू एलिएनेशन ट्रांसफर कर परिबी ना मु खाली एन्जॉयमेंट करियर राइट ट्रांसफर करिबी खाली एन्जॉयमेंट करियर राइट ट्रांसफर कर परिबी so therefore property को कौन कुहा जाए bundle of essential rights so गोटे property हैला गोटे लोकर bundle of essential rights right to enjoyment right to alienation right to stay there like right to have possession right to protect the property so various kinds of जिनस तार rights रहिला and से प्रकार rights जोड़ा सब अच्छे जदि सब transfer कर दोची मु ownership transfer करची ଯଦି any of them transfer कली then मु partial right transfer कली बुझी ହେଲା next a transferor cannot convey an interest which he himself does not have at the time of conveyance at the time of conveyance तो जदि प्रॉपर्टी कन्वे कला बेले मोर गोटे प्रॉपर्टी रे राइट नाही जो राइट टा मोर नाही मु सेटा को ट्रांसफर करि परिबी कि नो सो कौन कहला the transferor cannot convey an interest which he himself does not have at the time of conveyance केस लिखंतु समृद्धि देवी वर्सेस परशुराम बहुत ही पुराना केस हेतियो हां 1975 नारु जणा पड़छ आउ किछि टाइम परे केस लो विल बी नाइशा वर्सेस आयशा चिंक वर्सेस मिंक no Iswin versus Aswin Navanitis versus something now modern name Ishani versus Mishani okay so
So these are the things. The Samrati Devi versus Parasuram. Okay. तो एटी कौन कहला Shivansh versus Ayansh, right? But those are really good names. ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ. Okay. So the question is ନା ଆଗରୁ ନା ଗୁଡା ବହୁତ easy ଥିଲା. ସବୁ ନା actually ସବୁ generation ଅନୁସାରେ ଭଲ. Anyways, ଆମେ କୋଉଠିଥିଲେ? Conveys interest which himself does not have at time of conveyance. Okay. ତ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ conveyance time ରେ ନଥିଲା ସେ ସେଇଟାକୁ convey କରିପାରିବେ ନାହିଁ. So the question is very simple. If I am not the owner, whether I can transfer the ownership? And another important point जोटा आपनकर लेखिया दरकार नै but side रे खाली गोटे निजर knowledge ପାଇଁ कि लेखंतु whether transfer ଆଉ contract to transfer is same. ମୁଁ ଗୋଟେ property transfer कली ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ contract to transfer कली whether it is same? No. जम्मा transfer ଆଉ contract to transfer रे confuse हेबे नाही. Transfer माने ताको right टा मिली गला ना नाही. Contract to transfer रे ताको right मिली छि कि? Okay. So transfer is something else, contract to transfer is something else. Transfer माने मु right को transfer कर देली, contract माने मु contract करछि right को transfer करिवि. मु काहे कि शाश्वतिका is always last. शाश्वतिका रे spelling मते आज पर्यंत pronounce हबनी. So की आसले आबे Sasmita. So the question here is, if I am transferring a property to Sasmita, so I am transferring it now or not? Presently ମୁଁ ତାକୁ transfer କରିଦେଲି ନା ନାହିଁ conveyance feature हो present ରେ हो ଯାହା हो ମୁଁ transfer କରିଦେଲି but ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ contract କଲି କି ମୁଁ ତତେ future ରେ property transfer କରିବି then ମୁଁ transfer କରିଛି କି ମୁଁ just professes to transfer କରିଛି okay এই ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଟା transfer of property ରେ ବହୁତ time ରେ କାମରେ ଆସିବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା provision ଯୋଉଟା transfer ର contract ଅଛି ସେଇଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଅଛି ମାନେ professes to transfer contract to transfer ଆଉ transfer there is a difference okay ଯେମିତି କି I am telling you something if ମୋର ଗୋଟେ property ରେ right ନଥିଲା but ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ମିଂସାକୁ transfer କଲି the question is कि ଯଦି ମୋର right ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ମିଂସାକୁ transfer କଲି then whether that will be a transfer or that will be a contract to transfer that will be a contract to transfer because ମୋର right ହିଁ ନଥିଲା ମୁଁ ଦେଲି କେମିତି so that will be a contract to transfer ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଆମେ ପଢିବା transfer of property ରେ okay ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏତିକି ଭିତରେ କିଛି doubt ଅଛି ଆଉ ତ first ରୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ act ହେଇଥିବା ଦରକାର living person ହେଇଥିବା ଦରକାର transferor transferee capacity କାହାର କଣ then ଗୋଟେ conveyance ହେଇଥିବା ଦରକାର now come to present or in future the transfer of property professes to transfer माने contract to transfer okay so write down the transfer of property may be made the transfer of property may be made so as to take place with immediate effect or to take place on a future date or to take place on a future date prelims लेखिके side रे लिखंतु the expression in present or in future एटा प्राय question रे आसे the expression in present or in future governs the world conveys it does not govern property
A conveyance may therefore a conveyance may therefore be present, future, or conditional. A conveyance may therefore be present, future, or conditional. Present, future, or conditional. Or conditional. बुझिएला? So the question here is कि जो conveyance टा अच्छी सेटा present है परे, सेटा future है परे या फिर conditional है परे. किंतु property टा present property थिबा निहाती दरकार. Property टा existence रे थिबा निहाती दरकार. I'm giving you an example. A B को गोटे gift करला and सेटा immediately effect रे आसी गला. Then ताको presently से property को transfer करा है गला ना नहीं. A गोटे property B को transfer करला for life. Then से C को सेटा transfer करला. तो आगो B बंची थिबा जेन से property रखिबो B मल्ला परे property C को मिलिबो. Then C रो जो property टा convey हैला ताको. Then सेटा future conveyance or not only after the death of B. A गोटे property gift कला B को with a condition कि ताको property सेबे ही मिलिबो जेबे से तारो HSC रे first division रखिबो. And एबे question आसला तारो HSC रे first division रखिया ऊपर सेटा depend करूची ना नहीं ताको transfer टा. तो गोटे क्वेश्चन आसला एटे ट्रांसफर मु प्रेजेंट रे करि परिबी, ट्रांसफर मु फ्यूचर रे करि परिबी, कि ट्रांसफर मु कंडीशनल कर परिबी. किंतु प्रॉपर्टी टा एक्जिस्टेंस रे थिबा निहाती दरकार. सो द क्वेश्चन हियर इज कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर रो टर्म टा whether it is associated with the word conveying the property or whether it is associated with the term property. It's conveying. Conveying टा प्रेजेंट रे भी हेई पारे, फ्यूचर रे भी हेई पारे, इमीडिएटली भी देई पारे, फ्यूचर रे भी से नहीं पारे. Okay. So next write down property. Here property means and includes properties of all descriptions. Here property means and includes properties of all descriptions. गोटे गोटे पॉइंट लिखी चलो. Movable properties, example cars, tables. Immovable properties, example lands, houses. Movable property ଯେମିତି କି car, immovable property की जेमती house, land. Then intangible properties are example अपन माने देबे. Tell me. Intangible properties जेमती की right to catch fish, right to fishery, actionable claims, right to ferry. तो intangible property टाको whether देखी हुए कि only right exercise करी हुए ना नहीं. तो मोर गोटे घर अच्छी देखा जाउछ, मोर गोटे हाउस अच्छी देखा जाउछ, मोर गोटे गाड़ी अच्छी देखा जाउछ. मते पोखरी रु माछ धरिर राइट अच्छी देखा जाउछ. मते से जंगल रु तेंदुली कलेक्ट करिर राइट अच्छी देखा जाउछ. So मोर गोटे पैसा पाइबार राइट अच्छी देखा जाउछ. So those are all intangible properties. जोड़े कि actionable claim, fisheries, ferries ए सब राइट्स रे आसला. तो the question here comes कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रे प्रॉपर्टी टा जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी ପାଇଁ कि बना जाईची एक्ट टा. बट एटा सब प्रकार प्रॉपर्टी को इंक्लूड करूची ना नहीं. मूवेबल, इमूवेबल, tangible, intangible, everything. Okay. So what do you mean by a property? Write down. Property is essentially a bundle of rights or interests. Property is essentially a bundle of rights or interests. Then write down.
ownership or absolute interest hyphen, ownership or absolute interest hyphen, all the rights needs to be transferred, all the rights needs to be transferred, then partial or limited interest, partial or limited interest hyphen, sum of the rights or interest is transferred, sum of the rights or interest is transferred. Now you're going to give me example. Absolute transfer dita example कहले, sell out, exchange, sell, ये absolute transfer है जाए, gift, then partial transfer example देले दीटा, lease, mortgage, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ partial transfer. तो property ର definition ରେ ଆସିଲା property ଟା immovable ହେଇପାରେ, property ଟା movable ହେଇପାରେ, property ଟା intangible ହେଇପାରେ, property ଟା ଦିଟା right, property ହେଲା bundle of essential rights, right to possession, right to sell, right to enjoyment, तो bundle of essential rights of interest. तो जदि ownership transfer करिवि सबतक rights of interest transfer करदेवि, and जदि मो partial right transfer करछि then partially rights मो transfer करिवि, जेमति gift रे सब transfer हबा ना नाही, सेल रे सब ट्रांसफर हबने नहीं, किंतु लीज रे हबनी, मॉर्गेज रे हबनी, बिकॉज एवडा सब तक ओनरशिप को ओनरशिप नुहे से पे एथरे सब राइट ट्रांसफर हबो नहीं. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज the property must be a present property, the property must be a present property, the property must be a present property. Must be a present property. It exists on the date of transfer. It exists on the date of transfer. Property must be a present property माने date of transfer रे तार existence थिबा निहाती दरकार. केस ले हंतु जुगल किशोर versus Raw Cotton Corporation Limited. जुगल किशोर versus Raw Cotton Corporation Limited. Corporation Limited. Transfer of any non-existent property is void. Transfer of any non-existent property is void. Is void. माने फ्यूचर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जाई परिबो नाही. मु गोटे प्रॉपर्टी रो ओनर, whether I can transfer the property or not. मु गोटे प्रॉपर्टी रो टेनेंट, लीज होल्डर, पार्शियल राइट मोर अछि, मते सबलीज अलाउड अछि, whether I can transfer the property or not. Yes, मु भाबिले पण माने नो कहबे के जान. Yes, because I have that partial right, तो मु partial transfer कर पारि. बट ना तो मु ताधरे partial right रखी छि, हाँ सबलीज कर पारि, ना तो मु ताधरे partial right रखछि, ना तो मु ओनर, मोर से प्रॉपर्टी रे कोनोसी भी प्रकार रो राइट नाही. देन सेही जगह रे मु प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करि परिबि कि, बट मु प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर कर परिबि ना नहीं, किंतु ट्रांसफर कर परिबि कि, तो फ्यूचर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जाई परिबो कि, तो मो मते जो प्रॉपर्टी टा इनहेरिटेंस रे मिलिबो मु ताको एबे ट्रांसफर कर परिबि, मते जो प्रॉपर्टी टा विल अंडर रे मिलिबो मु ताको एबे ट्रांसफर कर परिबि, मते जो प्रॉपर्टी टा गिफ्ट रे मिलियार अछि मु भाबुची मु ताको ट्रांसफर कर परिबि, से सब जिंस मु ट्रांसफर कर परिबि नाही. प्रॉपर्टी बुझी गेला, प्रॉपर्टी सब प्रकार रे राइट
property माने bundle of essential rights or interest. Okay, and property टा present property थिबो, future property हबो नाही. Okay, next write down to another living person. To another living person. To another living person ଆମେ already ପଢି ସାରିଛେ, ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ. Transferee ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? Another living person को transferee କୁହାଯାଏ. Transferee need not be a competent person. Transferee need not be a competent person. Bracket रे maybe a minor, maybe a minor, maybe an insane, maybe an insane, or even a child in mother's womb. Even a child in mother's womb. Property cannot be transferred to a person. Property cannot be transferred to a person coach to a person who is not in existence on the date of the transfer. Correct? Who is not in existence on the date of the transfer. Who is not in existence on the date of the transfer. So Kankala property cannot be transferred to a person who is not in existence on the date of the transfer. तो तुम्हें गोटे माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर परिबो, इनसेन को कर परिबो, इवन मदर होम रे जी अछि तुम्हें ताको कर परिबो, बट द पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस ताको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर परिबेनी बिकॉज़ ट्रांसफरी को एग्जिस्टेंस रो थिबा निहाती दरकार. तो अनबोर्न चाइल्ड अंडर 13 माने जे ऑलरेडी कंसीव हेई भी नाही, बुझियला बिल्कुल ओम रे नाही, समवन जे आसी ही नाही संसार को एपर्यंत. फॉर एग्जांपल जदी आपण के बाहे नांती सस्मिता, so ଏବେ क्वेश्चन आसला मु सस्मितार पुओ को गोटे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करली, देन क्वेश्चन इज कि सस्मिता बाहा ही हेनी, अबे तार पुओ हबा 5-6 वर्ष 10 वर्ष से बाहा न हेले हबो ही नहीं कि जहां भी. तो क्वेश्चन हियर इज कि जी, अरे इट्स नॉट, इट्स एन एग्जांपल कि एक्स वाई जेड जी बी गिरिजा महाप्रभु बाहा ही नांती. द क्वेश्चन इज कि जदी तांकर पुओ को मो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करली, whether he is an unborn person or not. So he is an unborn person who is not even in mother's womb, but there is someone जे conceive करिसेंती और से अछंती और तांको पिलां को मो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करली जे ओम रे अछि. Now whether he is in existence or not, now he is in existence. तो simple जिंस unborn माने someone जहार existence ही नाही, बिना पानी रे नातुणी existence अछि तार, so से गोटा unborn person ना नहीं. बुझिलो what I am saying? So this is someone जहार आख पाखरे केही माने किछि संसार रे से बिल्कुल आसी ही नाही. हाँ, so एया ही हुए. For example, मो फादर एबे मो पुओ को गोटे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करचंती. So the question is कि whether मोर पुओ किछि नाही, तो क्वेश्चन ला ओम रे भी नाही, then whether he is a person in existence, no ए पर्यंत से आसी नाही. But for example गोटे ओम रे थांता जणे, then से जगह ताकू प्रॉपर्टी ट्रांसफर होला, then सेटा ट्रांसफर टू अ पर्सन इन एक्जिस्टेंस अछि ना नहीं. बट आ ऊपर गोटे क्वेश्चन आसिला आपन को मुंडे रे कि जदी से एक्जिस्टेंस रे नाही ओम रे अछि, हमें ताको एक्जिस्टेंस पर्सन कहूचे, बट द क्वेश्चन हियर इज कि एमती भी हे पारे जन्म हवा पूर्व से पिलेडा आसी पारे भी नहीं, ओम रे ही तार डेथ हे पारे. तो एबे हमें केमती कोन करिए, तो सेथि पे कि प्रॉपर्टी को दीटा वे रे ट्रांसफर को डिवाइड करला. सुनंदु एटा बहुत इंपोर्टेंट. गोटे आसिला कंटीजेंट ट्रांसफर, गोटे आसिला एब्सोल्यूट ट्रांसफर. ओके, तो गोटे को कुआ जाए कंटीजेंट बोली, जोटा कि वेस्टेड इंटरेस्ट आ गोटे कंटीजेंट इंटरेस्ट.
vested and contingent. Okay, so the question here is vested interest माने हैला कि absolutely immediately तारो से property टा हे गला. Contingent माने subject to an uncertain event. तो जदि गोटे पिलाटा mother womb रे अछि ताको गोटे property transfer करा गला जो पर्यंत से जन्म हैला नाही तारो जो interest टा रहिला सेटा contingent interest रहिला. Contingent माने जदि से फ्यूचर रे जन्म होउची देन मिलिबो नहले रिवर्ट बैक टू द पर्सन जे देइथिला बुझियला कंटीजेंट बस एतिकी ही एबे बुझंतु आ बेसी आ भितरे पसिया दरकार नै दिस इज हां हैपनिंग और नॉन हैपनिंग गोटे इवेंट ऊपर अच्छे कंटीजेंसी ऊपर तार अच्छी कि से जन्म हेले ही नबो नहले दैट विल रिवर्ट बैक सेटा को कंटीजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफर करिया बोली कहै जाय. So anyways, the question is here कि जदि गोटे क्वेश्चन आसिला कि ट्रांसफर रो कोनोसी कैपेसिटी थिबा दरकार कि ट्रांसफर रे व्हाट विल बी योर आंसर. Transferee should be a person in existence or not. गोटे माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा ही परिबा ना नहीं. गोटे पर्सन इन मदर ओम को ट्रांसफर करा ही परिबा ना नहीं. बट द पर्सन जे मदर ओम रे भी नहीं ताको प्रॉपर्टी जनरली ट्रांसफर करा जे परिबो कि नो. Then next write down transferee 2 may either be a human person or a juristic person. Transferee 2 may either be a human person or juristic person. Human person or juristic person. Okay. So next line, last point, to himself. To himself. Generally, one cannot transfer a property to himself. Generally, one cannot transfer a property to himself. But one can transfer a property. But one can transfer a property to himself in some other capacity. In some other capacity. और এটা কেবে add hitla 1929 रे. Okay, amendment act 1929 रे. Example लिखंतु owner to trustee. Owner hyphen trustee. मो गोटे जगार ओनर अच्छी मु ताको ट्रांसफर कर परिबी मो निजको एज अ ट्रस्टी. तो मु हेली ओनर ट्रांसफरर आ मु हेली ट्रस्टी ट्रांसफरी. आ भितरे कोनोसी डाउट अछि. तो फर्स्ट रो आसले गोटे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रे फर्स्ट कोन हेतिबा दरकार गोटे एक्ट हेतिबा दरकार. एक्ट माने रजिस्ट्रेशन हैला डिलीवरी ऑफ पोजेशन हैला किछि एक्ट होथिबा निहाती दरकार. सेकंड आसिला एक्ट रे मु गोटे राइट को कन्वे करूथिबा दरकार ना नाही. तो मोर कन्वेंस हेतिबा निहाती दरकार जहां पाखरे जोटा नाही ता द्वारा ताकू सेटा मिलिथिबा दरकार. मु गोटे लिविंग ह्यूमन जुरिस्टिक पर्सन हेतिबा दरकार ना नाही एंड सामना वाला भी गोटे लिविंग ह्यूमन जुरिस्टिक पर्सन हेतिबा दरकार ना नाही. बट आज ट्रांसफरर मोर कैपेसिटी थिबा दरकार. ट्रांसफरी रो कैपेसिटी दरकार नाही. ट्रांसफर रो कैपेसिटी हैला मेजर हेतिबो साउंड हेतिबो और क्वालिफाइड हेतिबो ट्रांसफर करिवा पाइन के. बट ट्रांसफरी को बस एक्जिस्टेंस रे थिबा दरकार. एंड कन्वेयंस रो टर्म टा प्रेजेंट और फ्यूचर हे पारे मु वर्तमान तुमको दे पारे या फिर फ्यूचर रे दे पारे किंतु प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एक्जिस्टेंस थिबा निहाती दरकार. प्रॉपर्टी फ्यूचर हेले सेटा ट्रांसफर हे परिबा नाही. मते जो प्रॉपर्टी टा मिलिबार अछि मु ताको एबे ट्रांसफर कर परिबी नाही. एंड मु निजे को भी गोटे ट्रांसफर कर परिबी जोडा कि मु अदर कैपेसिटी रे कर परिबी. सो आंसर मी फर्स्ट क्वेश्चन इज whether transfer of property is inter vivus or not. गोटे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टा ऑटोमेटिकली हुए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रे गोटे एक्ट हबा निहाती दरकार. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कि जने निजो को भी गोटे प्रॉपर्टी ट्रांसफर जनरली कर परिबो कि जने जनरली निजो को गोटे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर परिबो बट अनदर कैपेसिटी रे से निजो को ट्रांसफर कर परिबो ना नहीं. जनरली मदर होम रे जदी गोटे पिला अछि ताको ट्रांसफर करा जाय. जनरली मदर होम रे जदी गोटे पिला अछि ताको ट्रांसफर करा जाय. यस. बट जदी गोटे पिला मदर होम रे नाही जनरली ताको ट्रांसफर करा जाय. नो. बट देयर इज एन एक्सेप्शन 13 रे पढिया. गोटे ट्रांसफरर रो कैपेसिटी थिबा दरकार ना नहीं.
गोटे ट्रांसफर को मेजर आउ साउंड होतिबा निहाती दरकार ना नहीं मेजर आउ साउंड टा ट्रांसफर क्वालिफिकेशन ପାଇଁ କି दरकार जोठी मु सब प्रकार राइट ट्रांसफर कर दूची सेटा को को प्रकार ट्रांसफर कुहा जिवो ओनरशिप ना पार्शियल एब्सोल्यूट आ जोठी मु निजर ପାଇଁ कि किछि रखि कि बाकी ट्रांसफर करछि सेटा को कोन कुहा जिवो पार्शियल ट्रांसफर गोटे प्रॉपर्टी टा फ्यूचर रही परिबो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अनुसार ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करा जाय छै गोटे कंपनी बॉडी ऑफ एसोसिएशन कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड समस्ते गोटे जुरिस्टिक पर्सन हेबे ना नै आ भितर किछ डाउट अछि